सो वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ अवर पॉडकास्ट एंड इस पॉडकास्ट में मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ डिफरेंट प्लान करते हैं. हम बहुत पीजी प्रिपरेशन की बातें करते हैं, हम बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत ब्रांच सिलेक्शन, अबाउट पीजी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. बट एमबीबीएस इज नॉट ऑल अबाउट स्टडीज and a big part of MBBS is about your experiences with your batchmates, with other colleges, people, etc., etc. And so in this podcast, we'd like to discuss about how to deal with the heartbreak. So देखो सच्चाई तो ये है कि in MBBS I'm 110% sure that you will experience at least one heartbreak. And अगर नहीं किया तो congratulations if you married the soulmate and you found the soulmate in the first or second year itself. Congratulations. But mostly लोग you will get into a relationship in your MBBS first year, second year, third year. कभी तो कभी आओगे किसी form में. And more chances than less that the first relation might not succeed. You might experience a heartbreak, or you might be someone who might be breaking someone's heart, or whatever it is. And it's a reality. It's a reality of the current generation that we do have relationships. We do foresee heartbreak. पहले भी होते थे, अभी भी हैं. And the problem with the reason we specifically wanted to do it abhi isliye is because unlike maybe other people who might be facing a heartbreak with their current job or whatever it is, हमारे पास ना एक लटकती तलवार हर समय होती है. पीजी प्रिपरेशन या तो not just पीजी प्रिपरेशन यार, हो सकते हैं एग्जाम से पहले होता है. मतलब कोई प्रॉफ एग्जाम, मतलब हर एक साल में एक प्रॉफ एग्जाम भी आने वाला है और 5-5.5 साल बाद एक पीजी प्रिपरेशन का एग्जाम भी आने वाला है. और हार्ट ब्रेक अगर उसके आसपास कहीं ना कहीं हो ही जाता है कि या तो प्रॉफ की पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी या पीजी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही. So this is the reason we wanted to discuss it in the context that we always will be having some exam or the other in our life versus someone else who might have maybe shorter college life or maybe have more time, easier time to deal with a heartbreak as compared to तुम्हारे पास एक हर लटकी तलवार रहेगी. And apart from that, I think कि एक तलवार लटकी हुई है. एक एज ऐसी है ना 18 से 25 वाली एज जिसमें एकदम हार्मोन्स आपके एकदम पीक पर होते हैं. यू गेट अट्रैक्टेड टू द अदर सेक्स, यू गेट दोस फीलिंग्स, दोस मुशी फीलिंग्स. You know what do they call them? Butterflies in the stomach. Butterflies in the stomach, right? And so इस एज में especially dealing with studies, personal life becomes a challenge. Like we have crossed that age, I think, to a certain extent. We both are married, by the way. By the way, so a big disclaimer: we both are married, happily married, and इसकी 1 year anniversary हो चुकी है. Mine is going to be next month itself. Yeah. And we both are happily married, and we are going to discuss about our past relationships, obviously without any names. But both our wives know about all our past relationships. So please ऐसे कोई उनको message मत कर देना कि हम लोग nostalgic हो रहे हैं और हम लोग कुछ कुछ बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि दिस कंटेंट इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस. ठीक है, राइट. सो लेट मी जस्ट गेट ऑन विद इट. सो दिस I thought of doing this podcast more because I recently got a message on Instagram by one of the juniors asking me कि she recently underwent a breakup. I also, it's very common for me also to get messages regarding how do we deal with a breakup. Yeah. In fact, मैं जब भी कोई Instagram, ask me anything करता हूँ, एक 2-3 क्वेश्चन तो 100% होते हैं कि सर पढ़ाई ठीक चल रही थी, अब अचानक से बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया एंड अब बिल्कुल मन नहीं लग रहा. मतलब मन नहीं लग रहा, मतलब कॉल करने का मन कर रहा है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, एग्जाम 2 महीने में. हाउ टू डील विद इट? एंड थोड़ा सुपरफ्लुअस लगता होगा मे बी कुछ लोगों को, बट इट इज एक्चुअली समथिंग व्हिच इज सुपरफ्लुअस. क्यों है? we both have faced it. Yeah, we both have faced it. Exactly. है ना? So it's a reality of life. कभी ना कभी होगा heartbreak, and it's not at all superfluous. Just because you are not going through it does not make it superfluous for the person who is undergoing through that, who is having that problem at this point in life. And कभी भी ये सुपरफ्लुअस नहीं है. मतलब अगर सुपरफ्लुअस करे तो मैं तुम्हें जज करूंगा तो उसको सुपरफ्लुअस क्यों मान रहे हो? हाँ, it is a true feeling. I think it is a true feeling felt by someone who is in love or in a relationship in general. And so the question was that she recently underwent a breakup just last month with her boyfriend, and उसका मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, and she wants to talk to him, like पढ़ाई नहीं हो पा रही है. तो she just wanted to get some advice how to focus on studies right now and forget about him. And so through this podcast, let's delve deep into it, surrounding these matters about relationships, heartbreaks, love in MBBS, and those sort of feelings that we get when we are in this age group. I think it's a beautiful feeling to have at that age. Everyone undergoes this feeling. Even if I talk to my dad, एक बार हमारी heart to heart talk हुई थी मेरे dad की और मेरी, and he
did mention कि ठीक है उस टाइम पर सबको होती हैं, ठीक है, and there's nothing to feel bad about it. Everybody goes through a hard time. So मेरे personal advices इस मामले में we'll come to that. So let me tell you my personal experience about it. So it was in December during my internship that I was in kind of this on and off relationship with a girl, and we both liked each other. But since it was a little complicated, that relationship got extended to February, March, and it was only till March that we ended things peacefully. And so there was only 1.5 months left for the May INICT. 2 months maximum. 2 months maximum. And so I was also faced with this similar dilemma: how to deal with the breakup and how to get focused and get right back on track. So Aditya, as a friend of mine who जिस तूने मुझे देखा है उस टाइम पर डील करते हुए, what advice would you have given me उस टाइम पर? देखो एक्चुअली मैं सो बिफोर वी स्टार्ट ऑन एनीथिंग एक आई वुड एडवाइज यू कि अगर टाइम मिले देयर इज अ रियली गुड टेड टॉक. मैं सबको उसी की एडवाइस देता हूँ क्योंकि मेरा भी जब हार्ट ब्रेक हुआ था सो ही वेंट थ्रू हार्ट ब्रेक टुवर्ड्स द एंड ऑफ इंटर्नशिप. आई वेंट इट थ्रू मिडिल ऑफ माय इंटर्नशिप. बट इंटर्नशिप मोर इम्पोर्टेंट पीजी प्रेप से पहले ही हुई थी दोनों की दोनों. So I remember I was in a relationship, a 1-year long relationship which got over in July of internship. So मतलब मेरे भी बुरे हाल थे यार. It's not like कि मैं कोई बहुत है ना. So like that. So whenever I'm faced with this question तो उस समय I always advise for people to go and watch this TED talk. It's called How to Fix a Broken Heart by Guy Winch. Okay. Guy Winch. We'll get the link in the description about the TED talk. Please watch that talk. There are 2 or 3 important points about that talk which I want to tell everyone right now, which I think we both did in order to move on with our lives. And the first thing is that people tend to think that moving over someone is a passive process. कि ठीक है अब वो हमारी लाइफ में नहीं है, हम हमसे बात नहीं कर रहा, टाइम विल हील एवरीथिंग. हाँ अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं अपना काम करता रहता हूँ, या मैं अपने मैं पीछे पेट में लग जाता हूँ और अपने आप मैं भूल जाऊंगा, कोई और आ जाएगा. So the most important thing that he talks about, and I fully agree with it, is that breaking healing a broken heart is an active process. तुम्हें actively efforts करने पड़ेंगे to fix your heart. The first and active effort is actually to block that other person. मतलब a lot of people might say कि weak है किसी को block करना, है ना? Why do you need to block someone? But I would say अगर किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, let's say cheating करके दिल तोड़ा है, या फिर एक बहुत ही बुरा हार्ट ब्रेक है कि मतलब वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई है इमीडिएटली या इन्वॉल्व हो गया इमीडिएटली, तो बस तुम्हें से निकलना चाहता था, wanted to get, then please block that person. The more he talked it about like कि हार्ट ब्रेक एक एडिक्शन की तरह होता है जिसमें that person is the drug. When we are recovering from addiction, the first thing that we do for recovering addict, we do not keep on giving that drug, है ना? हम लोग एक्टिवली उसको बंद कर देते हैं. And again, some people will be like, sir, maintenance method होता है. So the maintenance method in this particular case is exploring your own self. किसी फॉर्म में कुछ छोटी सी अभी, the good thing is, let's say that you have 6 months for your PG preparation. I would actively advise people to 2 या 3 दिन की कोई ट्रिप पे चले जाओ. एक छोटा सा गेट अवे ले लो with a close group of friends. Chocolate helps, frankly. मतलब I remember कि Rishabh went through a breakup, he was crying, and हम लोग रात को एक chocolate we went to Taj. We went to Taj and we had this really good chocolate called क्या नाम था उसका? Bullseye. Exactly. So chocolate helps, talking to your friends help, and it's important that you let go of your emotion. अपने अंदर आप bundle up करके मत कर देना. Like मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैं रोया था, cry it out. ऋषभ हुआ था, ऋषभ रोया था मेरे सामने. There is absolutely no harm in that. तुम लड़के हो तो कोई मान लो कि लड़के का ब्रेकअप हुआ है कि हम तो रोते ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बकचोदी है वो. जाके किसी कोई अच्छा दोस्त है रो दो, absolutely no problem in that. Actively उसको ब्लॉक करो and then take a hard reset. Restart जैसे वो टेल्स में ना रीस्टार्ट करना होता है, तो तुम्हें you have to take a hard reset. Actively वो reset लेना पड़ेगा in the form of what? Actively तुम्हें किसी ट्रिप पे जाना पड़ेगा. तुम्हें एक्टिवली कोई एक हॉबी बनानी पड़ेगी. जो 1 घंटा तुम उससे बात करने आधे घंटे बात करने में लगा देते, वो 1 घंटा भी लाइफ में जो खाली हो गया है तो तुम्हें सताएगा, वो एक्टिवली तुम्हें किसी और हॉबी या किसी चीज जो तुम्हें पसंद थी उसको करने में लगा होगा. मूवीज वर्क, म्यूजिक वर्क्स,
गोइंग आउट ऑन अ वॉक वर्क्स, मेरे को ड्राइव्स पसंद थी, आई हैड अ कार, मैं ड्राइव पे चला जाता था, दैट वर्क्स, में ये चीजें एक्टिवली करनी पड़ेंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस ड्रग की फिर से हिट नहीं होना चाहिए तुम्हें। Yeah, and in that way, blocking that person from all possible contacts. So be it your Instagram, Telegram, WhatsApp, definitely, phone, even email, I would say, if that is a source of communication. And अगर आपको लग रहा है ना कि इतना एक्सट्रीम क्यों जाना है, मतलब that is like taking a war and like I don't want to go on a war, ठीक है, टेम्परेरी चले जाओ, you can always come back. Exactly. मतलब वही जब ठीक लगने लग जाए तो अनब्लॉक कर देना, मैं बात कर लूंगा फॉर दैट मैटर। हाँ, एंड मतलब बट उस समय करना जरूरी होता है। एंड it is not selfish, it is maybe selfish, it is selfish, but you need to be selfish. Yeah, in this case you need to be selfish to heal. It's not selfish, I would say, Rishabh, it's self-preserving. Yeah, exactly. Yeah, it's a better word. It's a self-preserving task. तुम selfish नहीं हो रहे, but you want to preserve yourself, you want to get yourself back on the track, right? And it just expedites the process. Eventually, yes, time would heal, but it just expedites the process. And since you have a larger thing at hand nearby, it is a expedition process in general. Definitely. And I would say that मतलब it takes time. It's not like कि ऐसे 2 दिन में तुम ठीक हो जाओगे या 4 दिन में तुम ठीक हो जाओगे या मतलब हो जाएगा, 2-3 हफ्ते लगते हैं to get back to. So give yourself time. वो 2 हफ्ते दे दो. There is no harm in that. In giving yourself those 2-3 weeks. और उसमें actively खुद को heal करने की कोशिश करो. That's what we have been trying to say. कि block कर दिया, actively किसी trip पे चले जाओ, actively cry out कर दो. And in the worst case scenario, if you feel कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा, there is no harm in talking to a therapist. Yeah. There is absolutely no harm in talking to a therapist. There is absolutely no harm in talking to a psychologist. Even in that video, Guy Bench talks about कि अगर मान लो किसी का हाथ टूटता है, तो हम जाते हैं ना ऑर्थोपेडिक्स के पास, है ना, ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर के पास हम जाते हैं, कहते हैं मेरा प्लीज मेरी हड्डी जोड़ दो, right? So what happens with a lot of heartbreaks is that a lot of cognitive errors tend to pop up in your mind, and if not taken check off, they can actually lead to clinical depression also. But it is shown that people who undergo heartbreak, around 20-30% might end up actually being in clinical depression because of the severe cognitive errors though that heartbreak has posed into. Like क्या like for example I'll give you catastrophization हो सकती है कि मेरे साथ बुरा ही होगा लाइफ में, मैंने सब कुछ अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा होगा. That's a cognitive error. This cognitive error is also found in people who have depression. So अगर ये multiply करता गया तो that heartbreak can easily turn into depression also. So there is no harm अगर तुम्हें लगे कि मेरा heartbreak ठीक नहीं हो रहा, 2-3 हफ्ते हो गए, बिल्कुल ही अभी भी दिमाग में वो है, talk to a therapist, talk to a psychologist. It's fully possible, like I said, 20-30% people might go into depression. If you might require medicine, and there's no harm in that also. No, definitely. I mean, if your serotonin reserves are low, it's okay to buy some reserves from outside. Yeah, right? exactly. So, and everybody's built different. See, it's fully possible some person might have, everyone's genetic makeup is different. So, a person who might be dealing heartbreak better, कि वो 2 हफ्ते में ठीक भी हो गया, maybe moved on, नई girlfriend बना ली, boyfriend बना ली, or whatever it is. उसका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम योर जेनेटिक मेकअप्स, सोशल स्ट्रक्चर अलग हो सकता है यार पूरा. एग्जैक्टली. तो लर्न टू रिकॉग्नाइज द साइंस कि मे बी मैं शायद ठीक नहीं हूं, 2-3 हफ्ते में नहीं हो रही हूं मैं ठीक, तो देयर इज नो हार्म एंड लेट्स ब्रेक द स्टिग्मा अबाउट इट आल्सो, टू टॉक टू अ थेरेपिस्ट और टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट इफ यू फील द नीड फॉर इट. मतलब even I would take Aditya's example again, that I remember that he was in final year of his MD when his dad passed away. And that was also a big shock for him, his family, and I think Aditya also mentions it on YouTube sometimes also, that these YouTube videos were sort of an active effort from his part to get over it. Fair enough. Like there's no doubt about that. Yeah. Like मुझको actively खुद को distract करना था, तो मैंने YouTube videos बनानी शुरू कर दी, और I'm grateful that they you know became viral or became popular or whatever it is. But it wasn't मतलब thanks to you also. मतलब if people don't realize this, उस समय क्या हुआ था, my father passed away in April. May June to से मेरे exams, मेरे final MD exams नहीं निकल गया था. It was only in July August जब मैंने फिर से I joined AIIMS again for my residency. A lot of people don't know about this, but so मैं pediatric oncology में DM कर रहा हूँ.
My father passed away from acute lymphoblastic leukemia, which is the most common malignancy in children, not in adults, but in children. मैं रोज किसी बच्चे को देखता था, and it obviously used to remind me of my dad, the kind of chemotherapy that he went through, and मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे उस समय cognitive errors थे. मैं उस समय भी psychiatrist के पास गया था, there was no harm in that, and उस समय भी as luck would have it, Rishabh stayed with me. It was a good thing. Because Rishabh who only said कि जा बना videos बना, popular हो रही हैं. He used to give me ideas कि आज तू ये बना सकता है, तू ये बना सकता है. In fact अगर तो मेरी एकदम original YouTube videos देखोगे तो you'll realize कि उसमें कई videos में at least 3-4 videos में Rishabh मेरे साथ है. And but it worked. मतलब वो active effort जो था to distract my, if not distract myself, but at least to engage myself in something productive. But it turned out to be something so beautiful, I would say. It is something you never imagined. I mean, none of us from aims, because our generation aims पे YouTubing was not a thing. Exactly. Like, so nowadays a lot of people will say कि सारे लोग डॉक्टर MBBS बन के YouTube channel खोल लेते हैं. So you have to realize this is not the thing for our generation. We were the typical ones कि आराम से MBBS की, MD की, मजे मारे MBBS में, not saying वो नहीं किया, DM कर रहे हैं, fellowship कर रहे हैं. And we were on the normal track. कोई ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ कोई मन था YouTube channel खोलने का and everything. Which I did it just for that, like you said, distraction purpose. उसमें मैंने इसको थोड़ा he then motivated me, and I also saw his success, and I thought कि I also have something to give. Exactly. So there's no harm in that. So but हमारे लिए, और अभी भी अगर तुम हमारे देखोगे तो हम लोग ऐसे professionally edited videos जैसे लोग कर रहे होते हैं ना, नहीं कर रहे होते. हम लोग एकदम इधर किसी को हमारा सेटअप दिखा देंगे कैसे वीडियो बन रही होती है. कभी-कभी you get mails ना कि डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता and team. There is no team. It is only Dr. Aditya Sanjay Gupta. Exactly. Like, you know, बहुत टाइम मेल आ रही होती है. So I'm the only one man show essentially. So और कोई वीडियो, so that's what I'm trying to tell you. कोई active process ढूंढ सकते हो. So you might be having a skill in the form कि तुम्हें drawing अच्छी लगती है. So वो drawing कर लो. Yeah. And anything can be, like you are a different person, and again we are coming back to that word active, because लोग इसको active process नहीं मानते. लोग कहते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा, वो नहीं होता, वो actively तुम्हें कुछ करना पड़ेगा. Yeah. Since we are on the topic of heartbreak, I also like to point out just one important advice that sometimes, you know, आपको पता होता है कि आप एक toxic relationship में हो. ठीक है, आपके दोस्तों को भी मेरे पता होता है, या वो बता नहीं रहे होते हैं आपको. नहीं पता होता है, सब बता रहे होते हैं, और वो जब ब्रेकअप होता है तो वो बोलते हैं देखो मैंने कहा था ना. बट सी इफ यू नो दैट थोड़ा मचने वाला है, नई सेटिंग बन रही, दैट देन प्लीज एज अ पर्सनली आई वुड एडवाइस यू कि प्लीज यू बी द वन टू ब्रेक अप. ठीक है, आई मीन इट साउंड्स अ लिटिल, this is very important actually. It sounds a little harsh maybe, but you know, facing a breakup is much tougher than, you know, giving the breakup. This is actually very true. मतलब ये चीज मैंने बहुत बार डिस्कस की है. बहुत बार डिस्कस भी की है. अगर let's say तुम्हें पता है ना कि if you feel that the relationship is going downhill, you don't want to break up. Let's say let's assume you don't want to break up. Let's put it this way. And you also know that you are the one giving more in the relationship, the other person is giving less in the relationship, and you don't want to break up. And you know that sooner or later the other person might break up. Okay, you don't want it to happen. It sounds very counterintuitive, but the thing that you have to do is that preemptively you need to strike and break up. Like he's absolutely right about it कि अगर मान लो कि relationship तुम्हारी already downhill जा रही है और तुम्हें लग रहा है कि 2 महीने बाद वो तुमसे breakup कर लेगा, 2 महीने छोड़ो, 2 दिन बाद वो तुमसे breakup कर लेगा, तुमने तो सही से सुन लिया है, तो it's better that तुम immediately उसको आके confront करो and you end it. I mean, there is some semblance to, मतलब there's something called winning the breakup वाला concept है. The fact that you have broken up, वो थोड़ा देखो, it's fully possible because every breakup is followed by cognitive errors, right? So when you're on the receiving end of a breakup, the cognitive errors will be more. Yeah, they'll be more, and they become मुझ में क्या गलती थी? Exactly. They become कि am I the problem? Like then the self doubt starts kicking in, and it's always tougher to get that thing out of your mind. Versus अगर तुमने breakup किया होगा, हो सकता है कि तुम्हें ज़्यादा बुरा लग रहा हो कि मैं वो शायद चल जाता है and everything, but again, it is self-preserving in nature. It is a little self-preserving in nature. It is quicker to heal.
है ना. So वो चीज रहती है. And the winning the breakup का जो हम लोग कंसेप्ट बता रहे थे वो ये रहता है कि since you have broken up of or an already dead or dying relationship, it ensures that कि मान लो कि तुम्हें पता था कि वो करने ही वाला है ब्रेकअप. द फैक्ट दैट यू हैव ब्रोकन अप ना वो एक मतलब वो कॉन्फिडेंस लोअर होने से बचाता है. हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बची रहती है एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्फ एस्टीम प्रिजर्व करने की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर, वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ our future hope. Exactly. All of us are looking towards a better future, right? And a hopeful future. So that hope remains preserved. If you हाँ, अगर तुमने ब्रेकअप किया तो तुम्हें पता है ना कि हाँ ठीक है कोई और मिल जाए. Yeah. किसी और ने ब्रेकअप किया तो तुम्हारे में कॉग्निटिव एरर रहेगा, क्या मुझे कोई और मिलेगा. हाँ, वो बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में, बहुत डिफरेंस है चीजों में. So this is obviously हर बार पॉसिबल नहीं है. हो सकता है कि तुम्हें रैंडमली तुमने अभी लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट ब्रेक्स, तो हो सकता है जो तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका हो. So that is also a thing. A little bit about one-sided love. I mean, it's a very complicated thing, तो वो one-sided love. one-sided सबका ही होता है यार, किसका नहीं होता है. At least guys के ज़्यादा होता है, I think. नहीं, लड़कियां भी अच्छा खासा one-sided कर रही होती हैं. हाँ, कर रही होती हैं, but it's just that कि लड़कों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, मे बी एक लड़की के लिए 5 लड़कों का one-sided love होगा. I don't know. But वो तो आई थिंक जेंडर रेशियो की वजह से थोड़ा सा है. हाँ, but regarding one-sided love, I would say that see, it's not a bad thing to have. I mean, the fact that you have those feelings for someone is not a bad thing. It's not a bad thing to have. I mean, it's one of the purest feelings that you'll get in your life. I mean, one being, I think a lot of my mother tells me this, that being a mother or being a parent is one true feeling. I think again, being in love with someone is again one true feeling. So it is not bad to experience it. उसमें कोई छल कपट नहीं होगा, उसमें कोई आपका मतलब नहीं होगा. उसमें it is a true feeling that you have for a person. It's not a bad thing to have. The only thing I would say is कि अपने फ्रेंड सर्कल को ऐसा बनाओ कि वो आपको बचा ले डूबने से. Exactly. So see, you like someone, the other person doesn't like you back, that's perfectly fine. Like you said, it's a natural feeling. कई बार होता है. The only thing that we would want to say is कि one-sided love, मतलब like you said, friend circle को बचा ले डूबने से, because इतने उसमें मत हार्ट ब्रेक में मत आता ना अगेन एंड one-sided love कि तुम फिर से भी क्लिनिकल डिप्रेशन या उस वाली फीलिंग में चलने लग जाओ या वो सब होने लग जाए. There is always like, I would personally say that अगर कोई छोटा बच्चा इसे देख रहा है 16, 17 या 18 साल का, I would definitely tell you one thing that जो तुम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, नॉट टू इनवैलिडेट व्हाट यू आर सेइंग, बट व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ इज इन्फैक्चुएशन. कोई प्यार नहीं होता, ठीक है. एंड द अदर थिंग आई वुड वांट टू से, जो कि सैफ बोलता था हम तुम में, जिंदगी बहुत लंबी है. You will find someone who loves you the way you love them. Yeah. And you will find someone जो कि तुम्हें उतनी रिस्पेक्ट दे, जो तुम्हारे साथ एंगेज करे, both for boys and girls. नहीं तो अरेंज मैरिज तो है ही. No, okay, so you talked about love. कि वो love नहीं होता, वो infatuation होता है. So क्या होता है love? यार, so मैं बताता हूँ love क्या होता है. I think love just like love थोड़ा active होता है यार. It demands efforts. Love is not an easy thing to do. मतलब I don't know whether it needs watering. It needs watering. It needs efforts, and I would say that कौन सी थी that which was it? Forgetting the name of that series. Fleabag. Fleabag में अगर तुम अगर again a really brilliant series, I would recommend everyone to watch it. Just 2 seasons, just 12 episodes. तुम आज के आज खत्म कर सकते हो उसको. It's available on Amazon Prime. उसमें लास्ट एपिसोड में प्लीज से समथिंग ऑन दिस लाइंस दैट लव इज ऑफुल, लव इज hateful, makes you doubt yourself, makes you kill yourself, but love is also about hope. And love is about and it takes a hell lot of hope to actually love someone, because you're literally putting yourself into the pedestal instead of the other person. And it is again, I would say, one of the truest feelings that you will have for anyone. Yeah. So it takes a lot of hope, and that's why only hopeful people can actually love. You can't be hopeless and love someone.
वो पैसिव हो जाएगा. And being hopeful takes a lot of effort, takes a lot of guts. And So okay, being in love takes a lot of efforts. So let's say you being in love does not take a lot of efforts. Being in love तो अपने आप हो जाएगा. But loving someone takes a lot of effort. ठीक है. So let's say you like someone, अभी like तक ही है, ठीक है, and you want to ask her or him out on a date. Okay. ठीक है. So what would be a perfect date according to Dr. Aditya Gupta? How would you plan a date for someone you like? ठीक है, चलो ट्रेड सीक्रेट सिखाता हूँ मैं. Strategy video. Strategy video. ठीक है, strategy videos. So first thing, a good date is something which is personalized. So you have to understand कि उसे पसंद क्या है. Okay, how do you start? Let's come from the basic. Okay. I like a girl. ठीक है, मैं डायरेक्टली तो उसको डेट के लिए नहीं पूछ सकता ना. So if you are in a workplace, I would say the easiest thing to do is maybe ask her out on a coffee की कैंटीन की कॉफी, कि मतलब ब्रेक है, लंच ब्रेक है, यही करना. लंच ब्रेक है, चाय पीने चलते हैं. A lot can happen over coffee. यही करना. It is very formal, it is very casual plus formal, and it does not brings a lot of ice also. So the thing that I would want to say is that there's actually a book. अगर पढ़नी है तो पढ़ सकते हो. There's a book by Robert Greene called The Art of Seduction: 24 Laws of Persuasion. Okay. उनमें उसमें एक law है जिसमें ये लिखा हुआ है that isolate your victim. See the words. Please don't go by the words. Okay. Like pray. हाँ, क्या pray करें anything. ठीक है. इनफैक्ट मैंने आज एक Instagram रील लिखी जिसमें उसने बता रहा था कि तुम्हें लगता है तुमने लड़की पटाई, बट ऐसा नहीं है, लड़की ने तुम्हें पटाने दिया. Very good. And this is the first sign. In fact, you know, if you ask a girl out on a canteen की चाय वाली date, that is the sign that okay, the girl is interested in talking to you. So basically, I'll say something like a lot of people tend to think कि बहुत ज़्यादा body बनानी होती है या again I'm talking about relationships per se. You want to go on hookups and on Tinders, ठीक है, तब body बनानी है, बना लो. That's not the thing that I want. वो because वो तो literally तुम्हारी शक्ल देख के वो करने वाले हैं. We're talking about that you like someone, तुम्हारी colleague है या तुम्हारी batchmate है या junior है या senior भी है for that matter. तुम उससे बात करते हो, तुम्हें बात करना अच्छा लगता है, and but just now you want to take it to a slightly step further. Okay. उस point पे I would simply say that first thing, most importantly, is that don't be a creep. A lot of boys tend to suffer from this. Yeah. Keep hey, hi. Hello. एक बार कॉल क्या नहीं उठाया, दूसरा कॉल आ जाएगा, तीसरा कॉल आ जाएगा, चौथा कॉल आएगा. भाई वो immediately कभी नहीं करना. वो मतलब तुम्हारी उतनी self respect होनी चाहिए. I mean that becomes a red flag. Then you come out of the prospect of being interested, and you become a creep. So वो नहीं करना. Ask her or him out on a formal, informal kind of. मना किया तो हाँ, मना किया. मतलब अभी कोई इतना थोड़ी ना, तो 6-7 महीने की एक साल की रिलेशनशिप में थे यार. बट लाइक ही सेड, द मोस्ट सिंपल थिंग, तुम्हारी कोई कलीग है तो उससे बात करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, तो सिंपलेस्ट थिंग यू कैन ऑलवेज डू, लाइक ही सेड, इज सिंपली से कि चल अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, कॉफी पीने चलते हैं, समथिंग लाइक दैट. So even I remember that when you and Divya started talking, and since I know him pretty well, so like between his duties there was a short break, and so he used to go out on कि बराबर में कैंटीन है, पैटीज और चाय मिलती है, चलो चाय पीने चलते हैं. कोई भी बुरा नहीं मानता उसको. कोई भी बुरा नहीं मानता. And the reason it is important is because वो जो उसने लिखा था ना, isolate your victim. You need some थोड़ा sort of a time जो कि सिर्फ तुम दोनों ही ढंग से बात करें, कोई और आसपास नहीं है. तो I would simply say that the way to any man's or woman's heart is simply कि अच्छे से बात करो, treat the other person with respect, and treat the other person with dignity, and listen to what the other person is saying. मतलब हम सब लोग बहुत इगोइस्टिक लोग होते हैं, हमें अपनी सुनाई बढ़ाई करना सबको अच्छा लगता है. सो खुद थोड़ा चुप, यू माइट थिंक दैट आई एम वेरी टॉकेटिव, बट जब मैं किसी लड़की को पर्सनली अच्छे से पसंद करता था तो मैं हर समय चुप रहता हूँ. तब मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता. ठीक है. तब वो जो बोल रही होती है सिर्फ वही सुना जाता है. जब वो जो बता रही होती है उसको अच्छे से अब्सॉर्ब किया जाता है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, whatever they are telling you right now, try to remember that, and it is the attention to the details that will make the future dates interesting, because they will give you hints कि मुझे ये पसंद है या मेरे को ये पसंद नहीं है, या ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कि like you know, I like pizza.
Yeah. I love pizza. I love pineapple on pizza. या जैसे दिव्या ने मुझे फ्री बाग का तो हिंट दे ही दिया था, उसने कोई रिकमेंड किया ही हुआ था. So I remember कि जब मैंने उसको प्रपोज किया था for marriage, तो मैंने उसको फ्री बाग की एक बुक साथ में दी थी. So these attention to details, these are the things which will make her fall in love with you or him fall in love with you, whatever it is. Like I remember one of my girlfriends, जब बहुत हम लोग close, एक और मेरी girlfriend का एग्जांपल देता हूँ. Girlfriend नहीं, I was sort of in a complicated relationship with her. She was a huge Harry Potter fan, like huge. Okay, so when I went to London, so I went to, देखो मेरे को हैरी पॉटर कोई पसंद नहीं है, let's be very honest. किसी को अगर लगता हो मेरे को बस ठीक है, मैंने मूवीज देखी है ना, that's about it. You're not a militant. I'm not a militant and I'm not a fan या जो भी है. Potterhead. I'm not a Potterhead. Let's put it that way. मतलब मैंने बुक्स तो पढ़ी भी नहीं है for that matter. So when I went to London, I still made it a point to go to 93/4 just for the photo part. But वहाँ पे ना उनका वो था, क्या कहते हैं, जिसमें वो ट्रॉय लेके अंदर जाते हैं. वो सब तो फोटो खिंचा ली मैंने, that's perfectly fine. उनका मर्चेंडाइज स्टोर था. अच्छा. Okay. Now उस मर्चेंडाइज स्टोर में अभी मैं उसको डेट नहीं कर रहा था भाई उस लड़की को, ठीक है. let's put it that way that we had said that we sort of like each other, but अभी कोई डेटिंग वाली चीज नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, nothing has happened per se. I went to that store, वहाँ पे ना जैसे Potter में that you have been selected for Hogwarts, so there you had the option that you can put any name and any address that you have been selected for Hogwarts. Very personalized. Very personalized. Yeah. Imagine that. नाम तो देखो सबको याद रहता है, मेरे को एड्रेस याद था, उसके घर का एड्रेस याद था. That is more important. In fact, मैंने उसका नाम लिखवाया, मैंने उसका एड्रेस लिखवाया, and when I came back to India, I gifted her that. She was in tears and like एकदम फ्लोर. ठीक है, मतलब ऐसे ये चीज जब करोगे तो लड़कियां फ्लोर हो जाती हैं. She asked me, देखो एड्रेस कैसे याद था, अब मैंने कब बताया मुझे रिपोर्ट देखा एड्रेस अपना. So I remember, but this is the attention to detail that will show that you respect them, you actually love them actually. And if someone is similarly doing this for you, let's say, तो तब मैं वो कलहुना वाली चीज बोलूंगा कि चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है मुश्किल से, है ना, उसको मतलब संभाल लो अपना. like you know, people who pay this like such attention to details, they are rare to find and keep them close, है ना. And that's how you plan a date, like he was asking, that these attention to details. See, it's very easy to go to a movie or it's very easy to go to a In fact, I would avoid going to a movie on a date. You know, तो कभी 2 घंटे चुप बैठ के सामने देखना, it doesn't really help anybody. Unless you're in a relationship, तब तो obviously nights बंद होती है तो कुछ अलग चीज होती है, ठीक है. But क्या कहते हैं, अगर उससे पहले है तो मूवी डेट प्लीज मत जाना. Try to make it a slightly personalized date जिसमें you show that attention to detail वाला thing. Yeah. And I think, I mean, अगर 1-2 dates, after 1-2 dates, if a girl is asking you on a third date or is agreeing to you for a third date, then that means that You are in a relationship, you both are serious enough. Both are serious enough and want this to continue. So that is about it. Yeah. So this was about how you get over a breakup. And the last part, a slightly fun segment about how to date. How to date. हमारे small tips and tricks. Strategy.